Good evening. Are you a diabetic? Do you want to be cured of your diabetes? Yes, you heard me right. I'm not talking about managing diabetes, I'm talking about curing diabetes. We have ample scientific evidence, hardcore evidence that type 2 diabetes, the majority of the patients can be cured. Yes, they can be cured. And not only diabetes, other lifestyle disorders like obesity, hypertension, that is increased blood pressure, heart disease, all these things can be cured in majority of the patients. Yes, before I proceed further, I like to tell you something about myself, my credentials, so that you can decide whether you will like to trust me and believe in whatever I am saying. I am Dr. Vivek Rana. I have more than 30 years of experience in treating patients. I am a graduate of prestigious Maulana Azad Medical College, Delhi, and then I did my MD in medicine and diploma in tuberculosis and chest diseases, also from Delhi University. And then I'm member of Royal College of Physicians, UK, and I have a certificate in rheumatology from European League Against Rheumatism, EULAR, from Zurich, and I had the good opportunity to learn the science and art of medicine from All India Institute of Medical Sciences and NHS UK. And if you feel my credentials are right and whatever I am saying you can trust that and you can believe that, then you can continue to listen to me. Yes. Diabetes is a disease which in majority of type 2 diabetics is curable now, and we have hardcore scientific data. The problem is we are not addressing the root cause of diabetes. We just hand over some pills to the patients. Definitely they have some role to play, they help the patients, but the problem is we are not addressing the root cause. Now what is the root cause? The root causes are problems with our lifestyle. I'll just give you an example. What will happen if you put diesel in your petrol car? Is it going to work? No. So similarly, this body has been designed for a particular type of fuel, for a particular type of food. So the problem is, we, as far as our food is concerned, its quality and its quantity, we are not doing it right. So what should we be doing? There are two things. What should we be eating and what we should be avoiding? In very brief, I'll be discussing that. First of all, our diet should be whole plant-based diet. I'll just give you an example. You get up in the morning, you have your morning tea, do away with that. Have a vegetable juice or a vegetable smoothie. What it means is multiple types of vegetables. जो भी आपकी seasonal vegetables हैं, आप उनको डालिए, and you can put some tulsi, some amla, some pudina in addition to those vegetables, and you can have a smoothie or a juice in the morning. Then after that for breakfast, आप छोड़ दीजिए paratha with ghee, lots of ghee, butter, all those things. No to that. Have a platter of fruit. And if you want to have some milk, you can have a soya milk or you can have some almond milk. After that, in the lunch, you should have a platter of full plate of salad, gajar, mooli, kheera, chukandar, whatever seasonal salads are available. And after that, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है. पूरी एक कटोरी भर के जो भी सीजनेबल वेजिटेबल है वो बनाइए, खाइए. और उसके अलावा यू कैन हैव लेग्यूम्स एंड बीन्स एंड पीस, जो भी दाल आपको पसंद है पूरी कटोरी भर के खाइए. एक कटोरी खाइए, 2 कटोरी खाइए, वेजिटेबल जो सीजनल है खाइए, और उसके साथ में आप अपनी रोटी खाइए. बट द थिंग इज दैट कि रोटी में यू शुड हैव मोर ऑफ मिलेट्स. आप उस जो भी आप फ्लावर बना रहे हैं, जो भी आप आटा बना रहे हैं, उसमें जवार, बाजरा, रागी, जो भी उस सीजन में उपलब्ध है, आपके एरिया में उपलब्ध है वो, और थोड़ा सा व्हीट मिला लीजिए उसके अंदर. एंड इट शुड बी कोर्सली ग्राउंड, थोड़ा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए. तो यू कैन हैव वट एवर अमाउंट्स ऑफ रोटी यू वांट टू हैव. एक खाइए, 2 खाइए, भूखा रहने की जरूरत नहीं. इफ यू आर अ राइस ईटर, हैव ब्राउन राइस. सिमिलरली इन द इवनिंग, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय छोड़ दीजिए. आप अगेन यू कैन हैव आलमंड मिल्क, यू कैन हैव सोया मिल्क, और इवन राइस मिल्क इज अवेलेबल. और आप एक फिस्ट फुल ऑफ सॉर्टेड नट्स यू कैन हैव. उसमें 3-4 आपके काजू हो गए, 3-4 आपका बादाम हो गया, 1 आपका अखरोट हो गया. दिस इज गुड फॉर हेल्थ.
और उसके बाद इन द नाइट अगेन यू कैन हैव अ प्लेटर ऑफ सैलड, और उसके बाद जैसे मैंने आपको रोटी बताई, रोटी सब्जी है। बीच में आपको अगर भूख लगती है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, या आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या आप सोयाबीन जिसको आपने उबाला हुआ है आप उसकी चाट बना के खा सकते हैं, आप किसी भी दाल की चाट बना के खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो प्लांट बेस्ड डाइट्स हैं। तो ये तो हो गया कि आपको क्या खाना है। आप कोई भी वेजिटेबल खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी ग्रेन खा सकते हैं, कोई भी आप लेग्यूम्स खा सकते हैं, आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप फुल क्वांटिटी में जितने में आपका पेट भरता है आप खा सकते हैं। नाउ हमें अब क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें हैं विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो यू हैव टू अवॉइड एनिमल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, पोल्ट्री हो गई, डेयरी, इवन डेयरी यू हैव टू से नो। एंड इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, what I will say is, and especially if you are not having diabetes, you only want to prevent diabetes, maybe you can have a cup of milk in a day, so it is fine, but not more than that. But if you want to reverse disease, you are a diabetic, you are a hypertensive, you have a heart disease, so तब आपको बिल्कुल ना करना है। So no to animal products, no to oils, no to butter, no to ghee, and no to refined carbs. आपको कोई मैदे वाली चीज़ नहीं खानी है, बिस्किट नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है, और बाजार में बनी हुई चीज़ जैसे समोसा, ये चीज़ें नहीं खानी है। इन एडिशन टू दैट देयर आर 2 white poisons. I think you have got what I'm trying to say. One is sugar. No to sugar. आपको मीठे का अगर बहुत शौक है तो यू कैन यूज डेट्स, खजूर। आप खजूर जो है आप अपने आलमंड मिल्क में डाल सकते हैं, अपना सोया मिल्क में डाल सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मिठाइयाँ, अपनी स्वीट्स, अपने डिजर्ट्स बनाने के लिए। देयर आर सो मेनी रेसिपीज विच आर अवेलेबल ऑन द नेट कि इन चीज़ों से आप कैसे टेस्टी, डिलीशियस, माउथ वाटरिंग फूड्स बना सकते हैं। नाउ वी कम टू सॉल्ट, अनदर व्हाइट पॉइजन। तो आपको सॉल्ट को आई नो दैट इट इज़ वेरी difficult to have food, it practically becomes unpalatable if you don't add salt to it. Yes, आप करो, but धीरे धीरे आप अपनी salt की consumption भी कम करो. So the only thing is that you give the right food to your body, and your body has the capacity to self heal. Not only it will reverse diabetes, आपकी diabetes भी better हो जाएगी, आपका obesity which is another epidemic, which is another problem these days, वो भी आपको लगेगा कि आपका weight अपने आप कम होने लगा है। एंड इन एडिशन टू दैट आपका ब्लड प्रेशर बेटर हो जाएगा, आपका हार्ट डिजीज बेटर हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बेटर हो जाएगा। तो यू विल गेट रीड ऑफ ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इन एडिशन टू डाइट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो कि आप टाइम पे सोएं, प्रॉपर नींद लें, आप एक्सरसाइज प्रॉपर करें, आप प्रॉपर मूव करते रहें, और आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। देयर आर प्रॉपर वेज टू हैंडल स्ट्रेस, टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी डाइट का और इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमको, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे परिवार वालों को डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे ही नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली इफ वी हैव दैट, हम इनको रिवर्स कर सकेंगे। दिस इज द ओनली वे वी कैन हील आवरसेल्व्स, वी कैन हील आवर बॉडीज। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स एज अ फिजिशियन फॉर 30 years कि अगर हम खाली दवाइयों पे ही चलेंगे तो आई हैव सीन कि आज आपको एक दवाई चल रही है, कल एक के बजाय 2 हो जाएंगी, फिर 2 के बजाय 3 हो जाएंगी, फिर इंसुलिन स्टार्ट हो जाएगी, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू विल हैव द कॉम्प्लिकेशंस। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हु ओनली रिलाई ऑन मेडिसिन्स, दे हैव मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। कल उनकी आंख भी खराब होगी, फिर किडनी भी खराब होगी, फिर हार्ट अटैक्स भी होंगे, ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम नॉट सेइंग थ्रो अवे योर मेड्स, आप उनको भी यूज करिए, बट वो एक दे आर जस्ट लाइक बैंडेड, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, आप उनको यूज करिए। बट अगर आपको अपने डिजीज को रिवर्स करना है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और कुछ समय बाद आपकी दवाइयां खत्म हो जाएं, यू आर फाइन, यू आर वेल, यू आर परफेक्टली हेल्दी विदाउट मेड्स, विदाउट योर मेडिसिन, तो आपको ये सिंपल लाइफस्टाइल और स्पेशली जो डाइट मैंने आपको बोला है ये आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड इफ यू डू दैट, I guarantee that your diabetes, your weight and your other lifestyle disorders will markedly improve. You will also feel very energetic and healthy and happy. Thank you. Bye bye. Stay healthy. Stay safe.